हेलो फ्रेंड्स, तो हमने जो है फर्स्ट एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 6 स्टैंडर्ड का जो पीडीएफ है वो हम स्टडी कर रहे हैं और हम चैप्टर 1 को कवर कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 दैट इज ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज इट इज गिवन, आई विल फर्स्ट रीड आउट। In the previous chapter, you have read that our planet Earth is not a sphere. It is slightly flattened at the north and the south poles and bulge in the middle. Can you imagine how it looks? You may look at globe carefully in your classroom to get an idea. Globe is a true model, miniature form of the Earth. Globes may be of varying size and type, big ones which cannot be carried easily, small pocket globes and globe-like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease. The globe is not fixed. It can be rotated the same way as a top spin or a potter's wheel is rotated. On the globe, countries, continents and oceans are shown in their correct size. It is difficult to describe the location of a point on a sphere like the Earth. Now the question arises as to how to locate a place on it. We need certain points of reference and lines to find out the location of places. You will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner, which is called its axis. 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, North Pole and South Pole. The globe can be moved around this needle from west to east just as the Earth moves. But remember, there is a major difference. The real Earth has no such needle. It moves around its axis, which is an imaginary line. Another imaginary line running on the globe divides it into 2 equal parts. This line is known as the equator. The northern half of the Earth is known as northern hemisphere and the southern half is known as the southern hemisphere. They are both equal halves. Therefore, the equator is an imaginary circular line and is very important reference point to locate places on the Earth. All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitudes. Latitudes are measured in degrees. The equator represents the 0-degree latitude. Since the distance from the equator to either on the poles is 1/4 of a circle around the Earth, it will measure 1/4 of 360 degrees, that is 90 degrees. Thus 90 degrees north latitude marks the North Pole and 90 degrees south latitude marks the South Pole. As such, all parallels north of the equator are called north latitudes. Similarly, all parallels south of the equator are called south latitudes. The value of each latitude is therefore followed by either the word north or south. Generally, this is indicated by the letter N or S. For example, both Chandrapur in Maharashtra and Belo Horizonte in Brazil, South America, are located on parallels of about 20 degree latitude. But the former is 20 degree north of the equator and the latter is 20 degree south of it. We therefore say that Chandrapur is situated at 20 degree north latitude and Belo Horizonte is situated at 20 degree south latitude. We see in figure 2.2 that as we move away from the equator, the size of the parallels of latitude decreases. So this is very important information ki as we move away from the equator, the size of the parallels of latitude decreases. You can see in this figure that the size of the latitude is decreases, right? Okay. और ये देखो यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है कि बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ द पोल स्टार फ्रॉम योर प्लेस यू कैन नो द लैटिट्यूड ऑफ योर प्लेस। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम पोल स्टार के थ्रू हम हमारा प्लेस की लैटिट्यूड भी डिटरमाइन कर सकते हैं और जो एंशिएंट टाइम में ऐसा ही होता था। Then important parallels of latitude. Besides the equator, the North Pole 90 degree and the South Pole 90 degree S, there are 4 important parallels of latitudes. Besides 0 degree, 90 degree south and 90 degree north, there are 4 important parallels of latitude. The Tropic of Cancer, 23rd and half degree north in the northern hemisphere, Tropic of Capricorn, 23rd and half degree south in the southern hemisphere, Arctic Circle at 66 and half degree north of the equator and Antarctic Circle at 66 and half degrees south of the equator. So these are the 4 important parallels of latitudes
besides 0 degree, 0 degree and 90 degree north and south. Then heat zones of the earth. The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. The midday sun never shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. The midday sun never shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. And the midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. Okay. The angle of the sun's rays goes on decreasing towards the poles. As such, the areas bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperatures. These are called temperate zones. Areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and Antarctic Circle and South Pole in the southern hemisphere are very cold. It is because here the sun does not rise much above the horizon. Therefore, its rays are always slanting and provide less heat. These are therefore called frigid zones. So, these are heat zones: torrid zone, temperate zone, and frigid zone. In total 5, because torrid zone is 1 and we have got 2 temperate zones and 2 frigid zones, 1 in each hemisphere. What are longitudes? To fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitude of that place. You can see, for example, that Tonga Islands in the Pacific Ocean and Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude. Now, in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the North Pole to the South Pole. These lines of references are called the meridians of longitude, and the distances between them are measured in degree of longitude. Each degree is further divided into minutes and minutes into seconds. They are semicircles and the distance between them decreases steadily polewards until it becomes 0 at the poles where all the meridians meet. Unlike parallels of latitude, all meridians are of equal length. Thus it was difficult to number the meridians. Unlike parallels of latitude, all meridians are of equal length. Thus it was difficult to number the meridians. Hence all countries decided that the count should be begin from the meridian which passed through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. This meridian is called the prime meridian. Its value is 0 degree longitude, and from it we count 180 degree eastwards as well as 180 degree westwards. The prime meridian and the 180 degree meridian divide the earth into 2 equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere. Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E for the east and W for the west. It is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line. 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line. Now, look at the grid of the parallels of latitudes and meridians of longitude on the globe. You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. For example, Dhubri in Assam is situated at 26 degree north latitude and 90 degree east longitude. Find out the point where these two lines cut each other. That point will be the location of Dhubri. To understand this clearly, draw equidistant vertical and horizontal lines on a paper. Label the vertical rows with numbers and horizontal rows with letters. Draw some small circles randomly on points where these horizontal and vertical lines intersect each other. Name these small circles as A, B, C, D, E. Let vertical lines represent east longitudes and horizontal lines as north latitudes. Now you will see that circle A is located on B degree north latitude and 1 degree east longitude. Find out the location of other circles. तो ये बकवास है, चलो ठीक है. आई होप आप समझ गए होंगे कि लॉन्जिट्यूड्स मतलब क्या है और लोकेशन कैसे डिटरमाइन होती है. जहाँ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्रॉस करती है वहाँ पर ही एग्जैक्ट लोकेशन होता है. तो यहाँ पर दिखाया गया टाइम जोन के बारे में, ये आप एटलास बुक में भी मिल जाएगा आपका, तो वहाँ से आप
देख लेना। और यहाँ पर हम बात करेंगे लॉन्जिट्यूड एंड टाइम की। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स। The sun regularly rises and sets every day and naturally. It is the best timekeeper throughout the world. Best timekeeper throughout the world, definitely. Local time can reckoned by the shadow cast by the sun, which is the shortest at noon and longest at sunrise and sunset. When the prime meridian of Greenwich, ये क्या बोला कि local time can be reckoned by the shadow cast by the sun, which is the shortest at noon and longest at sunrise and sunset। अच्छा, जब शैडो कास्ट करते हैं, जब हम वो क्या सन डायल बोलते हैं, तो उसकी बात कर रहा है कि उसके थ्रू हम लोकल टाइम को डिटरमिन करते हैं कि जब शैडो जब मिनिमम हो तब क्या है ना, नून है, ठीक है, जब लॉन्गेस्ट हो तब ये तो सनराइज है, ये तो सनसेट है। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. As the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those up to the west will be behind it. The rate of difference can be calculated as follows. The earth rotates 360 degrees in about 24 hours, which means 15 degrees an hour or 1 degree in 4 minutes. Thus when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degrees east of Greenwich will be 15 into 4, so 16 minutes. I hope you know this calculation of time, so I am skipping this. Okay, अगर आपको पता नहीं है तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा, इसको जानना होगा, उसी के बाद आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जस्ट रीड आउट कर रहा हूँ और क्या कंटेंट इसमें दिया हुआ है वो मैं देख रहा हूँ। तो इसमें मैं स्किप करता हूँ, जो आप देख लेना कि कैसे लॉन्गिट्यूड के थ्रू हम टाइम को डिटरमिन कर सकते हैं। एट एनी प्लेस ए वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky when it is midday. The time shown by such a watch will give the local time for the place. You can see that all the places on a given meridian of longitude have the same local time. Why do we have standard time? The local time of places which are on different meridians are bound to differ. For example, it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitudes. In India, for instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local times of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as the standard time for the country. In India, the longitude of 82.5 degree east. So this is very important कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो किस लॉन्जिट्यूड के थ्रू डिटरमाइन किया गया, तो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड treated as the standard meridian. So it is the standard meridian of India is 82.5 degree east. The local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country. It is known as the Indian Standard Time. Kabir lives in a small town near Bhopal. He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight. A day and night cricket match between India and England had started at 2 p.m. in London. This means that the match would begin at 7:30 p.m. in India and finish well into the night. Do you know what is the time difference between India and England? तो ये आपको कैलकुलेट करके आप कर सकते हो। India located east of Greenwich of 82 and 30 degree east in 5 hours and 30 minutes ahead of GMT. GMT means Greenwich Mean Time. Okay, so it will be 7:30 p.m. in India while it is 2 p.m. noon in London. तो इसकी जो है क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दे रहा है। Some countries have a great longitudinal extent and so they have adopted more than one standard time. For example, in Russia there are as many as 11 standard times. Okay, so in Russia there are 11 standard times. The earth has been divided into 24 time zones. The earth has been divided into 24 time zones of 1 hour each. Each zone does cover 15 degree of longitude. तो ये कुछ बातें आपको याद रखने की ज़रूरत है कि कौन कौन सी देश में कि टाइम जोन्स कितना है, ये ठीक है, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन कितना है, स्टैंडर्ड टाइम कितना है। तो रसिया में जो है एज मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम्स है उनका, रसिया का सबसे आई थिंक सबसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर दिया गया है। और बोल दी होल अर्थ हैज 24 टाइम जोन्स। तो ये कुछ बातें आपको याद रखना है जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, और जो भी और भी आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट हो तो आप नोट करके रख सकते हो। व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ? डेफिनेटली इट इज लाइक अ जियोड, इट्स अ जियोड, अर्थ इज अ जियोड।
और ट्रू शेप ऑफ द अर्थ इज यहाँ पर क्या दिया होता कि ट्रू शेप नॉट अ स्फीयर, राइट, ट्रू शेप इज नॉट अ स्फीयर, तो पहले ही दिया होता कि यू हैव रेड दैट प्लैनेट अर्थ इज नॉट अ स्फीयर, स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड बाल्ज इन द मिडल, सो दिस इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ, वो लिखना पड़ेगा। अब देखो कि व्हाट इज अ ग्लोब, तो व्हाट इज द लैटिट्यूडिनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड, व्हाई डज द टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, व्हाई इज इट 5:30 PM in India and 12 noon in London, and tick the correct answer. So the value of a prime meridian value of a prime meridian is क्या, 0 degree. The frigid zone lies near the poles. The total number of longitudes, that is 360 degree, longitudes 360 डिग्री, यस, क्योंकि 0 डिग्री एक है और इधर से 180 तो 179 होगा, और 0 डिग्री एक होगा तो 180, और ये 180 जो हो गया ऐसे करके, मतलब ईस्ट से गए तो हम 0 को और 180 को एक ही बार काउंट कर सकते हैं, तो बाकी 179 है, तो एक एक को दे दिया, तो 180 और 360, तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्जिट्यूड जो है वो आपका 360 हो गया। ठीक है, आई होप ये समझ में आया कि आपको कि हम 0 और 180 को एक ही बार काउंट कर सकते हैं क्योंकि वो एक ही है। ठीक है, बाकी रह गया आपको 179 और वेस्ट में भी 179, तो 179 प्लस 179 प्लस 2 टोटल हो गया 360। द अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ईस्ट में कहाँ पर है? अंटार्कटिक सर्कल डेफिनेटली सदर्न हेमिस्फीयर में है। ग्रिड इज ए नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड्स, ग्रिड, दैट इज ए ग्रिड, ओके। एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट, कहाँ पर? नॉर्थ सदर्न हेमिस्फीयर में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। द standard meridian of India is 82 and 30 degree, 82 degree and 30 minute east longitude. The 0 degree meridian is also known as prime meridian. The distance between the longitude decreases towards the poles, right? The Arctic circle is located in northern hemisphere, right? So distance between longitudes decreases towards pole, but the length of the parallels of latitudes decreases towards the pole. ठीक है, वो लेंथ था, यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो लैटिट्यूड होती है, कहाँ गया वो, ये एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेज। ठीक है, बट द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्जिट्यूड्स डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। तो ये कुछ बातें थी जो आपको याद रखनी है और इस चैप्टर में यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम थर्ड चैप्टर में जाएंगे। मेरा जो है, मेरे को इस वीक में मेरे को NCERT जो 6th स्टैंडर्ड का NCERT है उसे कंप्लीट करने का टारगेट लिया है, तो मैंने थर्ड चैप्टर में कंटिन्यू करूंगा। सो द थर्ड चैप्टर इज अबाउट मोशंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, एज यू नो दैट द अर्थ हैज 2 टाइप्स ऑफ मोशंस, नेमली रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। The axis of the earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane. The plane formed by the orbit is known as the orbital plane. The plane formed by the orbit is known as the orbital plane. The earth receives light from the sun. Due to the spherical shape of the earth, one half of it gets light from the sun at a time. Okay, तो ये जो टिल्ट है, ठीक है, 166.5 डिग्री का जो टिल्ट है विद द ऑर्बिटल प्लेन, तो ये आपको अच्छी से समझना होगा इस पॉइंट को, तो इसको जरूर समझ लेना आप। ठीक है, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्बिटल प्लेन क्या है ना, द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट is known as the orbital plane. The earth receives light from the sun. Due to high spherical shape of the earth, one half of it gets light from the sun at a time. The portion facing the sun experiences day while the other half away from the sun experiences night. ठीक है, तो ये बात बहुत अच्छी है कि due to the spherical shape of the earth only due to the spherical shape of the earth only half of it gets light from the sun at a time. इसलिए तो जब हमारा यहाँ दिन होता है यूएसए में रात होता है। ठीक है, ऐसा बात है। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे व्हाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन।
So these terminologies are also important if you are preparing for teaching examinations, like where MCQs dominate. This circle does not coincide with the axis as you see in figure 3.2. Definitely does not with the axis. So the earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. The period of rotation is known as the earth day. The period of rotation is known as the earth day. This is the daily motion of the earth. ठीक है, और यहाँ पर देखो इंक्लाइनेशन को अच्छी तरीके से दिखाया गया है कि ये जो द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट है उनके साथ जो अर्थ का जो एक्सिस है वो 66.5 डिग्री में इंक्लाइंड है, और जो नॉर्थ पोल के साथ द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन जो है, मतलब नॉर्थ पोल के साथ, ठीक है, पोल के साथ ये जो है नॉर्थ पोल के साथ जो है ये 23.5 डिग्री टिल्ट है। तो ये आप एक बार समझ लेना इससे। और व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, कि द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, दैट्स ब्रिंगिंग कंटिन्यूअस वार्मथ टू द रीजन। द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस। तो यहाँ पर बात करें कि व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। द सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। यहाँ पर हम रिवोल्यूशन की बात करेंगे। इट टेक्स 365 एंड 1/4 days and 1/4 days 1 year to revolve around the sun. We consider a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience. 1/4 day means 6 hours, क्योंकि 1 day is equal to 24 hours. Okay, so do you know क्या पर दिखा है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, do you know वाला सेक्शन, कि the ancient Indian astronomer Aryabhatta had stated that the earth is round and rotates on its own axis. The ancient Indian astronomer Aryabhatta had stated that the earth is round and rotates on its own axis. तो ये किसने बोला था कि अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन एंड ऑन इट्स ओन एक्सिस, ये आर्यभट्ट ने बोला था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये डेट्स जो होती है ये इंपॉर्टेंट है कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स, देन ऑटमनल इक्विनॉक्स एंड विंटर सॉल्स्टिस एंड समर सॉल्स्टिस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये डेट। तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स या वार्नल इक्विनॉक्स जो है 21 मार्च है, देन ऑटमनल इक्विनॉक्स है आपका 23 सितंबर, एंड समर सॉल्स्टिस है 21 जून, एंड विंटर सॉल्स्टिस होचे 22 दिसंबर। ठीक, तो ये भी अब इम्पॉर्टेंट है, ये डायग्राम जो है इसको याद रखना। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि 6 hours saved every year are added to make one day 24 hours over a span of 4 years. This surplus day is added to the month of February. Thus every fourth year, February is of 29 days instead of 28 days. Such a year with 360 days is called a leap year. Find out when will the next leap year will be. From the figure 3.3, it is clear that the earth is going around the sun in an elliptical orbit. Notice that throughout its orbit the earth is inclined in the same direction. A year is usually divided into summer, winter, spring and autumn season. Season change due to the change in the position of the earth around the sun. Let's do section हम नहीं करेंगे. Look at the figure 3.3. You will see that on 21st June the northern hemisphere is tilted towards the sun. The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. As a result, these areas receive more heat. The areas near the poles receive less heat as the rays of the sun are slanting. The north pole is inclined towards the sun and the places beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months. Okay, तो ये important है कि जो आर्कटिक सर्कल है ये 6 मंथ्स पूरा जो है जब सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहेगा तब ये आर्कटिक सर्कल जो होगा ये 6 मंथ्स सिर्फ पूरा ही जो है डे लाइट रहेगा. सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इट इज समर इन द रीजन्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस occur on 21st June. At this time in the southern hemisphere all these conditions are reversed. It is winter season there. The nights are longer than the days. This position of the earth is called summer solstice.
तो समर सॉल्स्टिस क्या है ये जानना इम्पोर्टेंट है। ऑन 22 दिसंबर or 22nd December, the Tropic of Capricorn receives direct rays of the sun as the south pole tilts towards it. As the sun rays falls vertically at the Tropic of Capricorn, a larger portion of the southern hemisphere gets light. Therefore, it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter nights. The reverse happens in the northern hemisphere. This position of the earth is called winter solstice. Do you know that Christmas is celebrated in Australia in the summer season? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि क्रिसमस जो है वो ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन में सेलिब्रेट किया जाता। ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। एट दिस पोजीशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। एट दिस पोजीशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, so the whole earth experiences equal days and equal nights. This is called an equinox. This is called an equinox. Equinox meaning the day and nights are equal. On 23rd September, it is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere. The opposite is the case on 21st March. When it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere, ये रिवर्स सिचुएशन की बात करें कि 21 मार्च की बात करें कि स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटम इन द सदर्न हेमिस्फीयर, दैट यू फाइंड दैट देयर आर डेज एंड नाइट्स एंड चेंजेस इन द सीजन्स बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रेस्पेक्टिवली। तो ये हमने मोशंस ऑफ द अर्थ पढ़ लिया, मोशंस ऑफ द अर्थ। अब क्वेश्चन क्या है ना, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन 66.5 डिग्री, डिफाइन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, व्हाट इज ए लीप ईयर, डिफरेंशिएट बिटवीन द समर एंड विंटर सॉल्स्टिस, व्हाट इज एन इक्विनॉक्स, व्हाई डज द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सॉल्स्टिस इन डिफरेंट टाइम्स देन दैट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, व्हाई डज द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सॉल्स्टिस in different times than that of the northern hemisphere. Why does the southern hemisphere experience winter and summer solstice in different times than that of the northern hemisphere? Because the tilt of the earth है ना। Why do the poles experience about 6 months day and 6 months light? तो ये दो जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है, इस पर आप और भी डिटेल में आप ट्राई कर सकते हो आंसर करना। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज अराउंड द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, ठीक है। एंड डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर, दैट इज 21st मार्च। मार्च ही तो था ना, क्या देख के बाद देख लेते हैं इसको। 21st डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द 21st मार्च इक्विनॉक्स। हाँ ये देखो, एक बार होगा 21st मार्च को होगा और एक बार होगा आपका 23rd सितंबर। तो ये दोनों जो है इक्विनॉक्स है, ठीक है। तो वर्टिकली पड़ेगा। डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन द इक्वेटर, यहाँ पर लिखा भी है कि ऑन 21st मार्च एंड 23rd सितंबर डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ऑन 21st मार्च एंड 23rd सितंबर डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। Then Christmas is celebrated in summer in Australia. Cycle of the season is caused due to revolution. Then a leap year has 366 number of days. The daily motion of the earth is 24 hours. The earth travels around the sun in dash orbit. The earth travels around the sun in dash orbit. यहाँ पर क्या होगा? The earth travels around the sun in dash orbit. The sun rays fall vertically on the tropic of Cancer on 21st June. Days are shorter during winter season. तो ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ था। एक क्वेश्चन जो अटक गया यहाँ पर वो है द अर्थ ट्रैवल्स अराउंड द सन इन डैश ऑर्बिट, मतलब यहाँ पर जानना क्या चाहते हैं। तो अगर हमने ऑर्बिट के बारे में सर्च किया ओ आर अच्छा, तो ये आंसर होगा कि द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन
in an elliptical orbit, right? The earth is going around the sun in an elliptical orbit. तो ये भूलना मत, द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। देखो ये मैंने हाईलाइट भी नहीं किया था बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके लिए हमको प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो मदद करेगा, बट अभी हम रीड आउट कर रहे हैं तो देखते क्या है नहीं है, रिवीजन तो देना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो है, आई थिंक ये थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर दिया हमने, थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे फोर्थ चैप्टर में। हम जल्दी से मूव कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये चैनल ही ज्योग्राफी है, हम ज्योग्राफी जो है हमारा ऑनर सब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली हम जस्ट रीड आउट कर रहे हैं कि क्या है एक्चुअल में, क्योंकि एनसीईआरटी का भी पढ़ा नहीं है हमने, तो इसलिए हम जस्ट रीड आउट कर रहा हूँ, बाकी तो ठीक है। चलो देखेंगे। ओके गाइस, तो हम क्लास 6 एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और चैप्टर 4 में क्या है वो देखेंगे अब। तो फोर्थ चैप्टर इज अबाउट मैप्स। You have learnt in the previous chapter about the advantages of a globe. However, globe has limitations as well. A globe can be useful when we want to study the earth as a whole, but when we want to study only a part of the earth, as about our country, states, districts, towns and villages, it is little help. In such a situation, we use maps. A map is a representation or a drawing of the earth's surface or part of it drawn on a flat surface according to a scale. But it is impossible to flatten a round shape completely. We find that maps are useful to us for various purposes. On maps show a small area and a few facts. Another map may contain as many facts as a big book. Okay, so when many maps are put together, we get an atlas. So what is an atlas? Now when we put many maps together, we get an atlas. Atlases are of various sizes, measurements drawn on different scales. Maps provide more information than a globe. There are different types. Some of them are prescribed below. सेपरेट टाइप्स ऑफ मैप्स की बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं फिजिकल मैप्स की। मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस एटसेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप। Then political map, maps on cities, towns, villages and different countries and states of the world with their boundaries are called political maps. Thematic maps, some maps focus on specific information such as road, vegetation, climate. These are all thematic maps. Rainfall, right, distribution of forest, industries are all known as thematic maps. Suitable titles are given on the basis of information provided in these maps. There are three components of maps, that is distance, direction and symbol. There are three components of maps, that is distance, direction and symbol. तो जिनका जियोग्राफी ऑनर्स है इसको बहुत ही याद रखना है इसको कि थ्री components of map, distance, direction and symbol. Then distance. Maps are drawings which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper. Or we can say maps are drawn to reduced scales, but this reduction is done very carefully so that the distance between the places is real. It can only be possible when a small distance on paper represents a large distance on the ground. Therefore, a scale is chosen for this purpose. Scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. For example, the distance between your school and your home is 10 kilometer. If you तो ये स्केल की कॉन्सेप्ट आपको होगा ये, ठीक है। चलो इसे छोड़ते हैं। स्केल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप. इफ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन ए मैप. व्हेन लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन ए पेपर, व्हेन वी यूज ए स्मॉल स्केल, for example 5 centimeter on the map shows 500 kilometer of the ground, it is called a small scale map. When a small area like your village or town is to be shown on paper, when we use a large scale map, that is 5 centimeter on the map shows 500 meters only on the ground, it is called a large scale map. So these two concepts are very important especially for UGC NET, like small scale map and large scale map. तो इसको कंफ्यूज मत होने का यहाँ पर कि स्मॉल स्केल मैप जो है वहाँ पर डिटेल्स थोड़ी कम होती है और लार्ज स्केल मैप जो है यहाँ पर डिटेल्स ज़्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो 5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 500 मीटर, दैट इज अ लार्ज स्केल मैप, एंड स्मॉल स्केल मैप क्या ना, जब 5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 500 किलोमीटर, दैट इज अ स्मॉल स्केल मैप, क्योंकि वहाँ पर डिटेल्स उतनी नहीं है, हम नहीं दिखा पाएंगे डिटेल्स स्मॉल स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप यहाँ पर डिटेल्स ज़्यादा है, तो दिस इज अ लार्ज स्केल मैप. लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन दैन स्मॉल स्केल मैप्स. देन ये हो गया डिस्टेंस की बात. अब आती है डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल. थ्री कंपोनेंट्स था, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल. तो हम सेकंड कंपोनेंट को पढ़ेंगे डायरेक्शन. मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो
marked with the letter N at the upper right hand corner. This arrow shows the north direction. It is called the north line. When you know the north, you can find other directions. For example, east, west and south. There are four major डायरेक्शंस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये सब तो पता ही है. दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स. तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है. दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स. अदर फोर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट. वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शंस. फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शंस फ्रॉम द फिगर. The direction of the community center. Okay, ये छोड़ो. We can find out the direction of a place with the help of a compass. It is a instrument used to find out main directions. Its magnetic needle always points towards north south direction. Right? So ये compass के बारे में तो आपको पता होगा ही. अब सिंबल की बात करते हैं. इट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए मैप. इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइन्स और ए वेल. सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइन्स. दीज सिंबल्स गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस. So, okay, so symbols give a lot of information in a limited space. With the use of these symbols, maps can be drawn easily and are simple to read. Even if you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for directions, you can collect information from maps with the help of these symbols. Maps have a universal language. सो दिस सिंबल्स आर यूनिवर्सल. मतलब हमारा कंट्री में जो मीनिंग है उसी सिंबल का सेम मीनिंग होगा यूएसए में जाकर. दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल. देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दिस symbols. Okay, international agreement. These are called conventional symbols. Some of the conventional symbols are shown in the figure. यहाँ पर दिया हुआ है conventional symbol. तो ये सब चीज़ें परीक्षा में नहीं आएंगे. Various colors are used for the same purposes. For example, generally blue is used for showing water. But ये important है कि ब्लू कलर जो है वो हम वाटर के लिए यूज़ करते हैं. ब्राउन जो है माउंटेन के लिए यूज़ करते हैं. येलो जो है येलो प्लेटे के लिए यूज़ करते हैं. येलो तो एग्रीकल्चर फील्ड के लिए होती है. ग्रीन इज यूज्ड फॉर प्लेन्स. अच्छा, ऐसा होती है. अच्छा, तो ठीक है. तो ब्लू इज यूज्ड फॉर वाटर, ग्रीन इज यूज्ड फॉर प्लेन. स्पेशली रिलीफ मैप की बात कर रहे हैं यहाँ पर. तो ग्रीन इज यूज्ड फॉर प्लेन्स, देन येलो इज फॉर प्लेटो एंड ब्राउन इज फॉर माउंटेन. ठीक है. हाँ, ऐसा ही होती है. फिजिकल मैप अगर आप खोलोगे एटलास तो वहाँ पर आपको ये दिख जाएगा कि माउंटेन्स, हिमालय जो है वो ब्राउन कलर में होगा, जो प्लेटो एरियाज है वो येलो कलर में है, और जो हमारा गैंजेटिक प्लेन है वो ग्रीन कलर में है. ठीक है. तो ये आई थिंक मैप यहीं पे ख़त्म होती है. नहीं, अभी है स्केच है. तो स्केच क्या है? स्केच इज ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड spot observation and not to scale. So sketches are not to scale. This is the main point. Sometimes a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect to other places. Suppose you want to go to your friend's house but you don't know the way. Your friend may make a rough drawing to show the way to his house. Such a rough drawing is drawn without scale and it is called a sketch map. So sketch map, right? It has no scale. Then plan. A plan is a drawing of a small area on a large scale. A large scale map gives lot of information. A large scale map gives lot of information, but there are certain things which we may sometimes want to know. For example, the length and breadth of a room, which can't be shown in a map. At that time, we can refer drawings drawn to a scale called a plan, right? So plan is the largest scale of map आप क्या बोल सकते हो. So let's do visit web portal school. तो यहाँ पर हमारा जो है चैप्टर 4 ख़त्म हो जाता है. यहाँ पर बोल रहे हैं कि भुवन NCERT का जो वेबसाइट है वहाँ पर आप विजिट कर सकते हो. वहाँ पर मैप मिलता है. मैंने भी किया था. हाँ, ऊपर सैटेलाइट इमेजरी जो है गूगल मैप की तरह मिल जाता है. और तो ये इंडिया का है. अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप? द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल. व्हाट आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शन? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म द स्केल ऑफ द मैप? How are maps more helpful than a globe? Distinguish between a map and a plan. Which map provides detailed information? How do symbols help in reading maps? So these are the questions. Which map provides detailed information? Large scale maps. Then maps showing distribution of forest are called thematic maps, right? The blue color is used for showing for water bodies. A compass is used to show to find the main direction, and a scale is necessary for a map. तो ये थी क्वेश्चंस. तो हमारा जो चैप्टर 4 है वो भी कंप्लीट हो गया, और बाकी रह गए 2 चैप्टर जो हम थोड़ी देर में ही कंप्लीट कर लेंगे.